पापा पकड़ा दूंगा। जुड़ जाइए दोस्तों, आप लोग जुड़ जाइए, लाइक को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को अगर सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मिलेगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट करेंगे हम। और अभी अगर सपोर्ट चाहिए कमेंट करो, मैं ज्वाइन करूँगी दूसरे फोन से आपसे। बिल्कुल लाइक करते रहिए और कमेंट कीजिए, सभी को सपोर्ट मिलेगा, सभी का चैनल ज्वाइन किया जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट और लाइक कीजिए।
उषा दीदी स्वागत है, वेलकम है हमारी लाइव में। मोस्ट वेलकम है दीदी। लाइव डन, थैंक यू दीदी लाइक करने के लिए। और बताइए दीदी कैसे हैं आप? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हंसने के लिए थैंक यू सो मच दीदी। मैं ठीक हूँ बहन, आप कैसी हो दीदी? हम भी ठीक हैं, बस थोड़ी तबीयत सही नहीं है। रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था दीदी, मैं हॉटस्पॉट लेके चला दे रही हूँ। कल रिचार्ज करवाऊँगी सुबह, फिर आप सबका सपोर्ट करूँगी। थैंक यू दीदी हंसने के लिए। दीदी क्यों हंस रहे हो, पहले ये बताओ। हंस रहे हो अच्छी बात है, लेकिन किस लिए हंस रहे हो? हमें भी तो पता चलना चाहिए दीदी। फ़ोटो देख के? उषा दीदी फ़ोटो देख के हंस रहे हो? थैंक यू सो मच दीदी हंसने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ जा रही है दीदी? विनय भैया स्वागत है, वेलकम है हमारी लाइव में। कौन बोल रहा था कि विकास नहीं हुआ है हमारे देश में? 40 का चीनी 70 में हो गया, अब कितना विकास लोगे? सही बात है विनय भैया, सही बात है। सब लोग बैठे हैं इसीलिए आवाज़ को बंद कर रखा है। अच्छा नहीं बहन, फोटो देख कर नहीं, फ़ोटो तो बहुत प्यारी है। और खाना पीना हो गया? हाँ दीदी खाना पीना हो गया, दवा खा के लेटी हूँ। अभी दुकान से आए थे तो मैं सोचा थोड़ी देर हॉटस्पॉट लेके चला लूँ लाइव को। विनय भैया जय भीम नमो बुद्धाय बोल रही हैं उषा दीदी। विकास नहीं हो रहा। सावन में दूध चढ़ाने वालों को लगता है कि भोलेनाथ उनके कर्म और दंड माफ़ कर देंगे। सही बात है। अभी नहीं भैया क्या बताऊँ, 2 दिन से तो परसों कल मेरा रिचार्ज ही ख़त्म हो गया था। कैसे हो विनय भैया, तबीयत कैसी है? विनय भैया की भी तबीयत उस बीच में ख़राब चल रही थी। ठीक नहीं है? क्या हुआ है विनय भैया? आप तो काफ़ी दिन से परेशान हो। विनय भैया क्या हुआ, आप तो काफ़ी दिन से परेशान हो। आपकी तबीयत काफ़ी दिन से ठीक नहीं चल रही है। अच्छा भैया क्या हुआ? हाँ दीदी भाई हम भी पूछ रहे हैं, काफ़ी दिन से परेशान चल रहे हैं। अभी आराम नहीं मिला है? अभी आराम नहीं मिला है विनय भैया, तबीयत खराब चल रही है। तो क्या हुआ है विनय भैया? आपकी तबीयत तो भी आराम 15-20 दिन हो गया है, क्या हुआ है विनय भैया? हाँ भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तभी तो पूछा है। कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाना। नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है, सफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत ना बदल जाए। करने का समय गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी। सही बात है विनय भैया, बिल्कुल सही है भैया। झूठ बोलना भी एक कला है, जिसमें इंसान अपने वे जानने और
सो मच सपोर्ट। नाइट विनय भैया, अपना ख्याल रखना। बहन मैं भी जा रही हूँ। ठीक है दीदी, बाय बाय, जाइए दीदी। अभी तो हम आप सबको सपोर्ट कल टाइम से रिचार्ज हो गया तो सपोर्ट करूँगी दीदी आप सबका। भैया जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है, वेलकम है आप। और बताइए एस भैया कैसे हैं आप? लाइक कर दिए हैं, सो मच लाइक करने के। जय भीम आयुष भैया, जय भीम। हम ठीक हैं, ठीक ही रहना चाहिए भैया, बहुत अच्छी बात है। हमारी तबीयत खराब हो गई, जुकाम बुखार हो गया। आवाज़ कट के आ रहा है। अच्छा, आवाज़ कट के जा रही है। हाँ तो हॉट स्पॉट में यही होगा भी। भैया सही से नेट नहीं पकड़ रहा है, कल करेंगे सुबह। आज कह रही थी कर दो रिचार्ज, तो करें कल सुबह करूँगा, कल सुबह करेंगे रिचार्ज। इसमें वही जो दवा बताए थे वही करिए। हाँ इस भैया करना पड़ेगा, लग रहा है ऐसे ही। हम तो 2 दिन से वही दवा कर रहे हैं। अच्छा, आराम है ना आपको? आपको आराम है ना इस भैया? जुकाम जुकाम जुकाम। और खाना पीना हो गया इस भैया? हाँ ठीक हो गए, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ऐसे भैया। खाना तो भी खाए नहीं होंगे इस भैया आपके यहाँ तो? अभी तो यहाँ 8
बज रहा है, वही तो अभी तो आपके यहाँ 8 ही बज रहा है, हमारे यहाँ बज गए हैं। 2-3 घंटा का रखा है ना यहाँ से वहाँ का। लाइव चलाए थे आयुष भैया आज तुम्हारे पास ये डिब्बा पड़ा था, दो दोनों डिब्बे पड़े थे, एक डिब्बा दुकान पे चला गया जिसमें रिचार्ज था, देते कहाँ से बड़ी वाली दीदी से हॉटस्पॉट लेके, क्या हॉटस्पॉट बड़ी वाली दीदी से, क्या दीदी के मोबाइल में हमारा चैनल लॉगिन एक डाल दी थी वीडियो, बैठे थे हम लोग डलवा लिए थे। 1 किलो मुर्गा, 250 ग्राम हरी मिर्च और तीखा होना चाहिए। आयुष भैया तो हम तो खाने के लिए तो खा लेते, तीखा मैं ही खाती हूँ, होना चाहिए ताकि मुँह में जाए तो नाक सीधा हाँ सही हो जाए, तब देखना गारंटी से ठीक हो जाएगा। हाँ इसलिए गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई है ना मुझे, इसीलिए तीखा अब क्योंकि गैस दवा लेके थोड़ा तीखा तो ज़्यादा खाती है, तीखा कम कर दो। मुझे मतलब तीख नहीं रहती है तो मुझे कुछ में नमक तेल का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तीखा बहुत खाती थी भैया। देखो सब अपने अपने घर का अगर चैनल है तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड भी तो दुकान से आ गए तो बस CID जब देख लेंगे, जब लाइक कमेंट करेंगे। बोलेंगे लगा दो आईडी, तुम चलाओ ना, अभी लगा दूंगा। थैंक यू सो मच आयुष भैया। रेट है भैया मुर्गा, आयुष भैया वहाँ क्या रेट है मुर्गा? 100 रुपये किलो, यहाँ तो 250 रुपये किलो है, 250। इंडिया का तो 250 रुपये किलो है। आयुष भैया साड़ी कहाँ से खरीदी हूँ? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, दुकान से खरीदी हूँ आयुष भैया। मुर्गा 10 रुपये किलो। अच्छा भाई यहीं का रेट वहाँ पे भी है, पर मुर्गा हम नहीं खाते हैं, लेग पीस खाते हैं बस। अच्छा हाँ
तो अलग से मिलता है ना, इंडिया में तो अलग से मिलता है वहाँ पे। यहाँ से अलग अलग मिलता है, मुरली मिलता है यहाँ पे भी शायद ऐसे ही है। ऐसे ही साड़ी वाला कर दीजिए हमारे घर 2 साल। अच्छा ठीक है, लेने कौन आएगा इस भैया यहाँ से? अच्छा घर के लिए पैसा हम भेज देंगे। अच्छा ठीक है इस भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू सो मच हरीश भैया, थैंक यू सो मच सपोर्ट मैसेज के लिए। थैंक यू गाइस।